You'll be surprised that none of the rivers in Odisha, none of the rivers in Odisha is conducive or suitable for bathing. ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ନଦୀ, ଆପଣ ମହାନଦୀ କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯେ ବୈତରଣୀ କୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ନଦୀ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ମାନେ ପାଣି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ୟୁଜ୍ କରିହବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କୌଣସି ନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଧେଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। Got my point? None of the rivers are suitable to take the bath, at least for the human being. I'm not talking about other species, maybe animals, and for other things they have more observing power. But for human being, waters in the rivers in Odisha are not at all safe or suitable. We can be prone to many diseases if you take bath in river. Okay. See, as far as the study is concerned, around 91,000 species, around 1,000 of species related to animals. India species ko hame kahiba, only animal we are talking about, right? ପାଖାପାଖି 91,000 types ର animals ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ବୋଧେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତ କେହି ନ୍ୟାସନାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ ଚ୍ୟାନେଲ କିମ୍ବା ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥିବେ ଭୌଗୋଳିକ। ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି ଏମିତି 65,000 types ର, ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ କି, ବୁଢିଆଣୀ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ। 65,000. You can imagine, how large our biodiversity is. We see there are many species or many animals or birds we are not, we are not habituated with. ଆମେ ବହୁତ ଏମିତି ବାର୍ଡସ୍ ଥିବେ କିମ୍ବା ବହୁତ ଆନିମଲ୍ସ ଥିବେ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଯୋଉ ଗଛ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ଆମେ ତା ସହିତ ହାବିଚୁଏଟେଡ୍ ନୁହନ୍ତି। But at the same time, there are large number of species still exist in our biodiversity. So the point is that the first point is that biodiversity gives enough scope to survive in a particular region. It may be oxygen, it may be water, it may be free air, it may be shelter. Shelter, why I'm saying shelter means, it may be because we are constructing shelter by taking the help of wood, or by taking the help of soil, everything, and also medicines. So biodiversity gives us enough scopes to survive. This is the number one aspect, which is direct linked with human being. Second is that cultural significance. Cultural significance or spiritual significance, you can also say. Once upon a time, people, or you can say ancient hermits, who are the saints who are there during that time, they get happiness and salvation in a very isolated biodiversity or in the forest. And even today, many tribes or many indigenous people, they consider the natural phenomena as a place of purity. आज भी बहुत जगह अच्छी, ओडिशा भी अच्छी, ओडिशा बाहर भी अच्छी, जो गुड़ाक आम नेचुरल फेनोमेना जोटा कोई जंगल हो पारे, किंबा कौनसी पक्षी हो पारे, किंबा कौनसी पशु हो पारे, आज भी आम टेक वन एग्जांपल, आम आज भी गाय को पूजा करुचे एज ए हिंदू। आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर रिलीजियस ग्रुप। हिंदू माने एबे भी, irrespective of whether they are theist or atheist, that does not matter. ସେମାନେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନ କରନ୍ତି, that's ଅଲଗା କଥା। But generally we believe that
Cow is a pious animal or holy animal. ठीक है ना कि so culturally or spiritually biodiversity also plays a very vital role in our life. A point आपण बुझी पारले? Yes, sir. Okay. And third and most significant point is that ecological balance. Ecological balance. Because without ecological balance, none of the species, including plants, can survive. So, and the major phenomena about the nature is that it easily refill or regenerate its resources. One of the positive side of nature is that it refill or revitalize its gap very soon. आपण माने जदि गोटे जंगल आमे काटी दउचे आपण माने देखंतु जदि 5 वर्ष आमे ताको छाडी दउचे 5 वर्ष पर गोला पुणी जंगल हे जाउचे. So this is a very significant aspect related to nature or biodiversity. So ecologically or ecological balance is very much needed for the survival, not only for the human being, also for all kind of species that exist on the earth. A point आपने बुझी पारले? Okay, let's talk about. I'm detail जाई पारुने बहुत जिनिस अछि किंतु मो जाई होने. It's not possible, right? Let's talk about threat to biodiversity. What are the major threats that is occurring in the modern days related to biodiversity? Number one, just you can write down also. Number one, unsustainable use of natural resources. Unsustainable use of natural resources. This is the first point. Second, habitational loss. Habitational loss. Number three, extinction of species. Extinction of species. Number four, pollution. Number four, pollution. Number five, global climate change. Global climate change. So these are the some of the important causes that always put threat for biodiversity or for our nature. If we start from unsustainable use of natural resources, hopefully आपण मानक जणा थिबो what is sustainable. आमे जो कहू जे sustainable development आपण मते कहि परिबे कि what does it mean? सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स माने आमे एबे एमिति डेवलपमेंट करिबा जोटा कि फ्यूचर जनरेशन ପାଇଁ कि किछि थ्रेट नथिबो. आम डेवलपमेंटटा फ्यूचर जनरेशन को कोनसी प्रकार थ्रेट माने दउ नथिबो. सेमिति टाइप रो डेवलपमेंट होछि सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Yeah, that's right. See, the thing is basically sustainable development means we should use according to our need. Okay? That means we should use the natural resources, we should use whatever the resources we have based on our necessity. And because if you use in certain methods, it for the future generation, the people or future generation, they may not suffer. ठीक है ना नहीं कि तो जो मैडम जो पॉइंट कहते it's right. So the thing is that number one is that unsustainable use of natural resources. And in this case, what is happening, for the sake of economic benefits or for the sake of wealth generation, nowadays, particularly in the days of globalization, each countries or every countries,
are fighting with each other related to market or economic activities are concerned. And in such situation, for the sake of generating more wealth, we are destroying our natural resources, and we are not utilizing our natural resources in a very sustainable manner. And that is one of the biggest threat to biodiversity. Okay, a point आपण बुझी पारले. Yes, sir. बुझेला sir. Okay, second point आमे कहूचे habitational loss. Okay, or habitat loss. When we say habitat loss, what is happening due to the industrialization or urbanization, or largely due to the population growth, okay, or demographic change, human being in the regular basis destroying the natural habitats or habitational area of other species. आपण मान जो देखुथिबे आमे कोन करूचे, वर्तमान आमे कोनसे स्पेस भी छाडू नै. आमे देखिबा कि सबुदिन डेली डे टू आपण जो गुटे गुटे छोटो टाउन कथा देखंतु, गुटे छोटो टाउन ने जोटा आज जो एरिया रे किछि भी नथिला, जंगल हेकी पडिथिला किंबा कोनसे अलगा बंजर हेकी पडिथिला, एनीथिंग वी कैन से, राइट. जते बळे एई सिचुएशन होउची, आमे कोन ताकू फॉर द सेक ऑफ आवर ओन बेनिफिट्स, ठीक अछि, फॉर द सेक ऑफ आवर ओन बेनिफिट्स वी आर डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल habitational area of other species. जा फଳରେ कोन होउची, gradually they are becoming extinct. आपण माने आश्चर्य हेबे, हम बहुत जिन जानि माने मैं देखि पारु ना, कारण इट्स नॉट एट विजिबल टू अस. इंडिया पाखा पाखी 10% plants have become extinct. We are not talking about animals or species. जेति परसेंट जो जेति टाइप्स ऑफ प्लांट्स थिला, तार 10% प्लांट्स टोटली एक्सटिंक्ट हे सारलानी. We cannot get back those plants. And that's why we are saying that human being is the major reason that create cause or that destroy the basic nature or the biodiversity. So this is the second point. Third point is that extinction of species for the sake of his own consumption and other purposes in a daily basis, human being creating problem for other animals and birds, and in such a way many species have extinct from the earth. आपण निजे चिंता करंतु, बहुत आमे कोन करूचे निजर बेनिफिट पाई, निजर कोर का लेदर दरकार है, कोठी का मीट दरकार कि अलगा कोनसी बॉडी रो पार्ट दरकार है, ठीक अछि ना नहीं कि. So for the sake of our own benefits, we are killing enormously, different species, and that led to another threat to different kind of species. এটা হচ্ছে আমরা থার্ড পয়েন্ট. ফোর্থ পয়েন্ট যেতেবেলে আমি কହୁছে পলিউশন, and it's very much understood how pollution create a hurdles for biodiversity. We need not to explain this point, along with global warming or global climate change. So if we summarize whole 5 points, we find that man is the problem for the earth, not any animals or species. जदि आमे टोटल सिचुएशन टा देखुचे, मनीष होउची सबुठ बड़ प्रॉब्लम, अन्य कोन से एनिमल किबा स्पेसीज नुह. जदि मनीष दुनिया न रहिबे, पुनी दुनिया टा पुनी पीसफुल रहिबो, नेचर पुनी नॉर्मल हे जिवो, ठीक अछि. इट मे टेक 10 to 20 years or 30 years, but again there will be peace, or there will be well preserved biodiversity. ए पॉइंट आपण बुझी पारले. hopefully okay, no problem, hopefully आपण बुझी पारि थिबे. आज के हम एक्सटिंक्ट जो हम कथा कहूचे, आपण देखंतु जो छोट बेला में थिले, ठीक अछि, छोट बेले चीता फॉर इंस्टेंस टेक द केस,
चीता एबे मिलू ना, इट्स वर्ड्स ऑफ एक्सटेंशन सेम एज द लायन। केवल इंडिया रे नुह, आपण थ्रू आउट द वर्ल्ड जो देखिबे टाइगर्स आर इन डेंजर। हमर गवर्नमेंट कैलकुलेशन पई हमें कहि दोचे कि 5000 बाघ अछंती। नो, 4 दिन तले गोटे रेकर्ड आस्तिला न्यूज पेपर रे, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर और स्टैटिस्टिक्स ऑफ दैट रिपोर्ट। आमे लास्ट जो हमर हमर अछि फॉरेस्ट एरिया में जो कवर करी, आज पर द स्टडी बाय एन इंटरनेशनल बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन, दैट the forest area in India has been increased in the last 10 years. This is the this is the report which has been released by the by our government. But according to latest study, actually it's a false information. It's not true at all, because the people or the officials who are engaged in surveying the forest territories, the forest land, they have knowingly or unknowingly included parks and habitational areas as a part of forest. আমি তাକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରୁଛି। ଆମର 4 ଦିନ ତଳ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଆପଣ ମାନେ ପଢିଥିବେ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସିଥିଲା। ଆମର जो लास्ट फॉरगेट इंटरनेशनल जो फॉरेस्ट जो तार सर्वे करूची, से रिपोर्ट रे आस्तिला जे 4 दिन तळे कि हमें गवर्नमेंट जो क्लेम करूची, ठीक अछि, कि हमर इंडिया रो फॉरेस्ट बढ़ीची, ठीक अछि, फॉरेस्ट लैंड बढ़ीची किंबा तार अमाउंट बढ़ीची, बट इट एक्चुअली फॉल्स। कारण होउची जो इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज आवर वेरी सी we for everything we always blame the government, it may state government or central government. We never consider that we are the government, we are also part of the government. Anyway, जो माने जो सर्वे रे एंगेज थिले, ठीक अछि, से माने कोन करिसंती, जंगल सहित जो पार्क भी ऐड करिसंती। धरा विभिन्न प्रकार पार्क अछि विभिन्न एरिया रे, ता सहित धरा जो किछि हाबिटेशनल जो लोक रहउचंती, जदि सेठी गछ गुडा बेसी अछि, सेगुडा मध्ये फॉरेस्ट लैंड भितर इंक्लूड करिछन, जा फल रे द एग्जैक्ट एरिया which need to be covered in the study has been exaggerated. जेति कि हमर रे रहिबा कथा, जेमिति स्टडी होबा कथा, जो प्रॉपर्ली स्टडी करा हेनी, ताको ऑफिशियल माने मिसलीड करछन, गवर्नमेंट ऑफिशियल माने मिसलीड करछन। इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सेम जिनस हम कहउथिले, थरा जो हमें क्लेम करूछे जंती कि हाथी संख्या बढ़ी छन, व्हाट एवर यू क्लेम, बट इन रियलिटी the numbers are decreasing day by day, because the people or the officials who are involved in counting those species either mislead or they have exaggerated the facts. ए पॉइंट आपण बुझी परले? Yes sir. Recently it has identified 18 hotspot in India. 18 hotspots in India. Okay, that means these are the areas where biodiversity is severely affected due to the involvement of human being. Okay, 18टा सेमिति और हॉटस्पॉट करा हेछि, जो गुडा को वर्तमान ताकू रिजर्व एरिया भाबरे गणा होउछि, ठीक अछि, दैट मीन्स प्रोटेक्टेड एरिया बाय द गवर्नमेंट। 18टा स्पॉट इंडिया रो ताकू आइडेंटिफाई करा हेछि। सेथि मध्यरु किछि मेजर हॉटस्पॉट गुडा को होउछि हिमालयन बेल्ट, जो गुडा हमें कहू जे सब बेले मेनली ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय, एंड अनदर इज द वेस्टर्न घाट, जोडा हमें कहू जे डेक्कन रो जोडा अछि हमर पर से लागि के रहउछि वेस्टर्न घाट। ए गुडा को होछि मेजर हॉटस्पॉट, जोठी बायोडाइवर्सिटी इज सीवियरली अफेक्टेड। बहुत रीजन पाई किछि ताको, बिकॉज़ फॉर द सेक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वी आर डिस्ट्रॉयिंग सच नेचुरल फेनोमेना। आपण माने बर्तन देखुथिबे, आमे प्रत्येक, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी स्पेसिफिक गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होंतु किंबा सेंट्रल गवर्नमेंट होंतु,
आपण ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲର ଜାଗାରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହଉଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି ହଉଛି, ମାଇନ୍ସ ଏରିଆ ସେଠି ରହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ସେ ଏରିଆଟା ପଲ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଉଛି। On the one side, it is destroying the existing biodiversity. On the other hand, it is also creating a lot of problems for the people who are living adjoining to that area. ए पॉइंट आपण बुझी पारले? Yes, sir. ओके, सो गवर्नमेंट बर्तमान कौन करुच्ची, बर्तमान गवर्नमेंट आमर गोटे जिनिस होची गवर्नमेंट रो कोलाबोरेशन अछि विभिन्न इंटरनेशनल बॉडी सहित, ठीक अछि, एंड इट हैज बीन आल्सो सिग्नेटरीज ऑफ डिफरेंट इंटरनेशनल बॉडी, एंड व्हेन एनी गवर्नमेंट sign any international agreement, that government need to follow some basic principles जे कोन जिनिस, because international body is always there to scrutinize or to scrutiny do the scrutiny of that particular country. So वर्तमान कोन होउची गुटे टाइम थिला आमे आइसोलेशन रे रहुथिले, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड लिबरल वर्ल्ड रे वर्तमान समस्त समस्त ऊपर नजर रखुछन। आपण माने कहि परिबेनी आमे लुचि की सब करि परिबा, not like China, because China is not a part of larger globalization. No doubt China trade बढ़िछि किंबा सर इकोनॉमिकली ताकर बहुत आगे रे अछंती, किंतु we are unable to enter what is happening in the Chinese society. आमे कहि परिबेनी चाइना रे कोन होउछि, because international bodies or international media are not allowed to enter into China. एनीवे आमे सेते सेगुडा डिस्कशन करिवार किछ आवश्यकता नै। तो पॉइंट होउची बर्तन 18टा स्पॉट आइडेंटिफाई कराइछि। नॉट ओनली दैट, इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट has classified some major rivers and steps have been taken to clean those rivers. बुझी पारछन नै कि आ गुटे जिनिस बर्तन गवर्नमेंट प्लान गवर्नमेंट रो चली इनिशिएटिव रे आमर जो मेजर रिवर गुड़ाक अच्छी, इट मे बी गंगा, इट मे बी जमुना, इट मे बी अदर रिवर जहाँ भी आम कहे कृष्णा गोदावरी किसी भी दामोदर जहाँ भी आम कहते, इवन हुगुड़ी रिवर जोटा हुगुड़ी रिवर बहुत पल्यूटेड वर्तमान, ठीक अच्छे जो आम कहे कालकाटा सेपटे जाइए, इट इज सो मच पल्यूटेड। तो वर्तमान गवर्नमेंट कौन करुच्ची बहुत नदी से आइडेंटिफाई करिछि एंड हाउ दोज रिवर्स कैन बी क्लीन्ड, से स्टेप गुड़ा सब निया जाउची। हमर प्रॉब्लम रहुची हम इंडिया बायोडायवर्सिटी चेंज रैपिडली होउची बिकॉज़ वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम आवर पीपल। वी ऑलवेज ब्लेम टू द गवर्नमेंट। हम देश रे गंगा हमर गंगा रिवर को हमें कहिबा, crores of rupees are spent to clean Ganges। गंगा किंबा ता ट्रिब्यूटरीज जो रिवर गुड़ा अच्छे ताको क्लीन करिया पाई crores of rupees government is spending our money, taxpayers money it is spending, but still it has not been properly done because people who are living nearer to that river or both sides of the river are not at all concerned। आपण माने देखुते बहुत टाइम रे देखुते आमे गंगा को पवित्र रिवर भाबरे देखुचे, किंतु कोन होउची आपण देखुचंदी लोक माने बनारस सेपटे कोन होउचंदी लोक माने जने मरी गला पर ता पोड़ी की हाफ बॉडी वन बॉडी अता फोपाड़ी दउछंदी पानी की, ठीक अछि, एलोंग विथ अदर अमेनिटीज जा रहउची ताको मध्ये फोपाड़ी दउछंदी, ठीक अछि। तेणु जा फल रे कोन होउची प्योरिटी ऑफ द वाटर has been decreased rapidly। मुझे आगु कहिथिली इंडिया आपण बर्तन कोन रिवर, ठीक अछि, कोन रिवर बर्तन सुइटेबल नुह कि आपण गाधेबा उपयोगी भी हमें जोटा कहिबा, ठीक अछि। एनीवे आम एते डिटेल जाई परिबानी। सो वी हैव थ्री मेजर ऑर्गेनाइजेशन, one is Botanical Survey of India, one is Botanical Survey of India, and second is Zoological Survey of India। Botanical Survey of India, Zoological Survey of India, and National Institute of Oceanography, National Institute of Oceanography।
Recently, in the last decades, all these three organizations or three थ्रीटा national कौन कहले organizations, National Institute of Oceanography, जो समुद्र ऊपर जो स्टडी होउची, ठीक है ना नहीं कि ओशनग्राफी, आपण बुझी पाले मैडम? यस सर तेणु ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ এই ତିନିଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରିଛି? It has given specific responsibility by which our biodiversity, you know, biodiversity can be placed in order. ଆମର zoological survey of India ଅଛି, botanical survey of India ଅଛି, oceanography ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ aspect ଗୁଡ଼ା ନିଆ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ strongly ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ହେଇଛି how a natural order can be maintained. As far as I said, in regard to the biodiversity. ତେଣୁ ଏଇ ତିନିଟା ଯୋଉ ବଡି ଅଛି କିମ୍ବା ତିନିଟା ନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅର ସେମାନଙ୍କ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି in relation to the conservation of biodiversity. ଏଠି ବୁଝିପାରିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ସମସ୍ତେ? यस सर ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ କହୁଛେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରିଛି? It has classified the conservation into two categories. The government of India has classified the conservation into two categories. One is ex situ conservation, EX-SITU, EX-SITU conservation आपण बहिरे भी थाई पारे, ठीक अछि, ex situ conservation, and another is in situ conservation, IN-SITU conservation. One is ex situ conservation, another is I forgot it, in situ conservation. X in दीटा मन रखि तांतु दीटा जगह situ लागुची, SITU एठी मध्ये सिटी लागुची. And what is the difference? And ex situ conservations, artificial development of habitational area of different species and plants. ex situ अर्थ होउची artificial development of different species and plants which are in the verge of extinction. या अर्थ होउची गवर्नमेंट कोन करिछि दीटा बर्तन डिवाइड करिछि, क्लासिफाई करिछि. जेतु हम ex situ कहूचे इंडिया बहुत बर्तन प्लांट्स हो कि स्पेसीज हो सेगुड़ा बर्तन कौन कहल एक्सटिंक्ट द्वार अच्छी माने केते बड़ी टोटल आम पूरा संपूर्ण भाव में लोप पाई. तेणु गवर्नमेंट कौन करिछि बर्तन तांको बर्तन कैटेगराइज करिकि को गुडा डेस्ट्रॉय हेबा पर अछंती संपूर्ण लोप पाई जिबार अछि ताको बर्तन से क्लासिफाई करिकि ताको ex situ कैटेगरी कोन होछि. एंड ex situ कैटेगरी आनिला परे गवर्नमेंट कौन करुछि बर्तमान तांको पई आर्टिफिशियल हैबिटेशनल बायोडायवर्सिटी डेवलप करा होछि. आर्टिफिशियल, सपोज टेक द केस, इट मे बी zoological park, it may be botanical park, or it may be aquaria, different kind of aquaria जोटा हमें कहूछ aquarium, छोटा हमें कहूछ aquarium कथा कहूछे, बड़ हले aquaria तक कहूछे for the ocean, any kind of living elements of ocean. तेणु कौन बर्तमान गवर्नमेंट कौन करुछि बहुत जीव पाई जो गुडा लोप पाइबार अछि तांको पाई बर्तमान कौन करा होछि डिफरेंट टाइप्स रो बर्तमान तांको पाई हैबिटेशनल डेवलपमेंट करा होछि जो गुडा हमें कहूचे आर्टिफिशियल डेवलपमेंट. ठीक अछि ना नहीं कि हमें ता कहूचे आर्टिफिशियल डेवलपमेंट. जो सेही भला हम देखिबा अप टू 2010 और 15 पाखा पाखी 85 नेशनल पार्क डेवलप कराइछि. 85 नेशनल पार्क डेवलप कराइछि.
ठीक अच्छे ता सहित पाखापाखि 498 डिफरेंट सेंचुरीज डेवलप कराई ठीक अच्छे ना नहीं कि 85 नेशनल पार्क आमे कहूचे दीज आर द आर्टिफिशियल डेवलपमेंट और हैबिटेशनल डेवलपमेंट तार तो भाबी नियंतु आमर एठी ओट रहिबा पई उपयोगी ओडिसा नुह टेक द केस राइट किंतु आमको ओट को रखिया पड़िबो कैमेल को आमको रक्षणाबेक्षण करिया पड़िबो तेणु आमे कोन करूचे फॉर इंस्टेंस आमे ओट रहिबा भली गोटे जागा उपयोगी डेवलप करूचे ता पई से को घास खाउची केते पानी पीबो केते टेंपरेचर रहिले ओटटी रहि पारिबो ठीक अछि ना नहीं ता पई गोटे आर्टिफिशियल गोटे हैबिटेशन डेवलप करा होची and not only for the animals or species it is also includes plants and in that direction around as I said earlier around 85 national parks and along with 498 different sanctuaries have been developed by the central government ए पॉइंट बुझी पारले आपण माने Yes, sir. ओके एटा होची हमर एक्स सीटू कंजर्वेशन या को हमें कहूचे एक्स सीटू कंजर्वेशन आटा होची कोन इन सीटू कंजर्वेशन इन सीटू कंजर्वेशन अर्थ होची whatever the habitational areas are there for the natural elements or natural species and plants and are on the way of destruction and are on the way of destruction the government has taken different initiatives by which those natural habitational area can be protected आमे जो ताको सिंप्लीफाई में करूचे ठीक अछि या अर्थ होउचे आमे जतबे कहूचे कि भाबी नियंतो गोटे एरिया अछि ठीक अछि जोठे संपूर्ण भाव नष्ट हेनी से जीवजंतु रही के अछंती ठीक अछि ना नहीं सेठी आमे कोन करूचे ताको से रहिला बळे आहुरी ताको प्रोटेक्टेड करूचे रिजर्व करूचे धरा जो हमर टेक द केस हम ओडिसा रे को सिमिलीपाଳ टेक द केस ठीक अछि हम जो सिमिलीपाଳ कहूचे ठीक अछि सिमिलीपाळ को हमें कहूचे रिजर्व फॉरेस्ट के प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहूचे ठीक अछि ना नहीं कि प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम कहूचे कि रिजर्व इकोसिस्टम कहूचे तेणु जते बेला हमें ए जिनिसटा कहूचे सेते बेला कोन करूची गवर्नमेंट वर्तमान इंडिया बहुत एरिया को मु जोटा 85 कथा कहूतिन 498 कथा कहूतिली ता पेरिफेरी सब हमर एक्स-C2 डेवलपमेंट करा हिची कारण जो नेचुरल सेंचुरीज अछि किंबा हमर अभयारण्य अछि जहां भी अछि दिस आर द नेचुरल एरियाज ताको हमें खाली डिमार्केशन करूचे किंबा क्लासिफाई करूचे सो आम एक्स-C2 और इन-C2 भितरे जो आम एरिया वाइज देखिबा ताको पाखा पाखी सब डेवलप करा जाय आपण हिमालय एरिया रे गुटे तरह जो गुटे इकोसिस्टम अछि ताको आनी के महाराष्ट्र हम से इकोसिस्टम आपण डेवलप करि परिबे so the point is that most of the artificial habitat areas are located nearer to the in situ conservation area ए पॉइंट आपण बुझी परले सर एक्स-C2 टा बुझियला हेले इन-C2 टा टिके बुझियोनी सुनंतु आमे तो एक्स-C2 कथा कहूचे एक्स-C2 टा हमर कहूचे आर्टिफिशियल जिंस गुडा ठीक अछि भाबी नियंतो जोटा गुडे जीव गुडा चाली जलणी किंबा लोप पाइबार अछि किंबा कोनसी प्लांट लोप पाइबार अछि ताको आमे कोन करूचे जते बळे गुटे नुवा गुटे आर्टिफिशियल एरिया तयारी करूचे पाखा पाखी आमे मुजरा उदाहरण देली ओटम कथा ओटो आज ओडिसा रही पारे इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल तेणु धरा जो भाबी नियंतु हमर राजस्थान ओटो रहउछंती we can try suppose in Gujarat area is also similar to Rajasthan but camels are not there तेणु आमको जो सिमिलर हैबिटेशनल किंबा सिमिलर जो लैंडस्केप अछि से एरिया रे आमको कोन करिया को पड़िबो किंबा गवर्नमेंट करूची आर्टिफिशियल हैबिटेशनल एरिया डेवलप करूची
जो गुड़ाक जो प्राणी किंबा जो कौन गछपत्र जोड़ा नष्ट होगा ऊपर अच्छा कि डिक्लाइन हवा ऊपर अच्छा कि लोप पाइबा ऊपर अच्छा कराऊँच मु जो कहली 85 जो आम नेशनल पार्क अच्छी कि अराउंड 500 498 और एबव दैट जो गुड़ा सेंचुरीज अच्छी दीज आर द नेचुरल प्रोटेक्टेड एरिया बाय द गवर्नमेंट बुझीपार ना कि ता पेरीफेरी रे आमर सब आर्टिफिशियल बर्तन हाबिटेशनल एरिया तैयारी करा होउची जोटा को हमें कहूचे हमें एक्सुटी कहूचे आ जोड़ा ना आगुरु अच्छी गवर्नमेंट ता प्रोटेक्ट करूची ताको हमें कहूचे यू नो इनसुटी कहूचे एति बुझी पारले आपण यस सर कि को डाउट रहला बुझी पारले सर बुझी पारले एक्सक्यूज मी सर आज्ञा कोन सर सैंक्चुअरीज ता ताले इन सिटू रे सर जीवो कोन कहले सैंक्चुअरीज गुड़ा जो अच्छी बिकॉज़ दे हां आर एनिमल्स हां लिव इन द सुनंदो नेचुरल हाँ जो गुड़ाक आमर नेचुरल सेंचुरीज अच्छी ठीक अच्छे बुझीपारे जो गुड़ाक माने आगुर गछ अच्छी कि पूरा अच्छी से गुड़ाक आमर जीव कि जोड़ा आर्टिफिशियल तैयारी करूचे कथा बुझीपारे धरा जो एरिया मोटे गछ ना कि प्रॉपर हाबिटेशन है पूरा पूरा नुआ बनेबे आर्टिफिशियल सेंचुरीज गले से गुड़ाक आमर जीव कौन एक्सिटू रे जीव एति बुझीपारे मैडम हाँ नंदनकानन जीव आई एम नॉट श्योर बट मोस्ट प्रोबेबली नंदनकानन नाम जीव कौन एक्सिटू रे जीव बुझीपार ना नहीं कि कारण एटा को आमे गवर्नमेंट जदियो एटा को आमे किछि एटा आमे कोन एटा को हिसाब रे निया जूलॉजिकल पार्क हिसाब निया ना कोन निया होछि नंदनकानन को जूलॉजिकल पार्क जूलॉजिकल पार्क एटा जति कुहा जीव नो डाउट ट्रीज आर देयर नो बट इट इज मेड बाय द और इट इज नो established by the government बुझी पारछन रे नाही कि एथिरे जीव गुडा हाबिटेशनल एरिया नुह कथा जानि पारछन आपण जो जूलॉजिकल पार्क कहउछन आपण लागुची एते छोटो जगह भितरे एते स्पेसीज रहिबा कथा कि नो आमे जदि आपण नंदनकानन जिबे बहुत जीवों को आपण केज भितरे पाइबे किंबा गोटे स्पेसिफिक ताकू रेलिंग कराही से भितरे आपण पाउछन ठीक अछि बट इन रियलिटी as a part of natural species they need to roam according to their wish जोटा संभव नुह जेते बेला हमें एई जो जूलॉजिकल पार्क हमें कहूचे बुझी पारले ना हमर आपण थरा जो गिर फॉरेस्ट जोटा हमें कहूचे ठीक अछि जोटा गिर फॉरेस्ट कहूचे सेटा हमर नेचुरल फेनोमेना नो डाउट इट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हमें कहूचे बुझीपार ना गिर फॉरेस्ट आम जो टाइगर कथा कहूचे लायन कथा कहूचे गिर फॉरेस्ट उदाहरण आम सब दौचे ठीक अच्छे ना तेणु सेगुड़ा हूँ नेचुरल सेगुड़ा आमर जीव कौथे आमर इनसिटू रे जीव एति बुझीपारे ना आपण यस सर okay so these are the some of the initiatives which are taken by the government in different times. In 1992, India signed the convention of. In 1992, India signed the convention of International Convention of Biodiversity, or it became a signatories of International Convention of Biodiversity. Okay, and as a signatories, India has taken responsibility to protect certain species, extinct species, and plants in its own subcontinent. आमर 92 मसीह रे गोटे आमर इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी आम नेक्स्ट क्लास डिस्कशन करिबा अबाउट डिफरेंट जिंस गुडा कोन कोन ए पर्यंत नेचर प्रोटेक्ट करिया पई किबा ग्लोबल वार्मिंग चेक करिया पई कोन कोन मेजर समिट हे जोटा हम काली किबा पता पर लास्ट क्लास रे हम डिस्कशन करि पार तो जते बेला हम कहूचे बायोडायवर्सिटी कथा होची 92 मसीह रे गोटे बायोडायवर्सिटी नै कि गोटे इंटरनेशनल मीटिंग हेतिला किबा कन्वेंशन हेतिला ठीक अछि से कन्वेंशन आ गोटे जिनस हम कहबा को चाहूची मोस्ट ऑफ द कन्वेंशंस आर वॉलंटरी इन नेचर
those are not mandatory that once you sign you have to follow all the obligations, not at all. एपर्यंत आमर ग्लोबल वार्मिंग कथा कहूचे, क्लाइमेट चेंज कथा कहूचे, काहींकि आमर एते फलप्रद हेई पारुनी, कारण मोस्ट ऑफ द कन्वेंशन और मोस्ट ऑफ द समिट्स आर वॉलंटरी इन नेचर. कौन से कंट्री साइन करिया पे बाध्य नहंती, जो माने अटेंड करूछंती, they can oppose the decision or they can oppose the any kind of agenda of any convention or summit. तेणु से जो बर्तमान डिबेट चली रिगार्डिंग द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस पूर्व थर कहूली आमर फलप्रद हो पारे. ठीक अच्छे. सेम जिनिस इंटरनेशनल कन्वेंशन जोड़ा बायोडायवर्सिटी कहूचे जो 92 रे आमर इंडिया सिग्नेटरीज तार, इट इज ए पार्ट ऑफ वॉलंटरी ऑब्लिगेशन by the Indian government. बुझी पारछन रे नहीं कि तेणु इटा गोटे स्टेप निया हेछि by which at least in the government level some species or natural elements can be protected. एति बुझी पारले आपण माने. Yes, sir. Okay. आउ गोटे जिनिस आमे नेग्लेक्ट करिबा नै, हमर जोटा कहूचे एनजीओ को आमे सबले गुरुत्व दबार आवश्यकता रही इन रिलेशन टू द नेचर और बायोडायवर्सिटी. द रोल ऑफ एनजीओस आर वेरी मच सिग्निफिकेंट. इट मे बी फॉर अ स्मॉल एरिया और स्मॉल लोकालिटीज. आपण माने देखुथिबे बहुत एनजीओस असन क्लीननेस, दे आर गिविंग इंपोर्टेंस ऑन क्लीननेस ऑफ आवर सराउंडिंग्स, प्लांटेशन, बहुत जिनिस रे इन्वॉल्व होउछथि फ्रॉम स्मॉल टू बिग. ओके. तेणु जिते बड़े आम एनजीओ कथा कहूचे विभिन्न एनजीओ बर्तमान एक्टिव अच्छा. ठीक अच्छे ना. आमर इंटरनेशनल डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरनेशनल एनजीओ कहतु किंबा आमर नेशनल एनजीओ कहतु किंबा स्टेट लेवल एनजीओ कहतु, दे आर वेरी मच कंसर्न टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट और प्रोटेक्ट द बायोडायवर्सिटी. आम गोटे छोट उदाहरण दे परिबा. आमर आपण जानिछंती चिलिका जो लेक कथा कहूचे. ठीक अछि. इन टाटा कंपनी, टाटा कंपनी had a plan. Tata company had a plan to develop a prawn industries. Prawn industry हम जो चिंगुड़ी चाष कहूचे, prawn industries in चिलिका. Prawn farming करिया पाई even it had made an agreement with the contemporary government. सेतेबेले जे गवर्नमेंट थिले हमर 80s रे even तांको सहित मत एग्रीमेंट करा हैतिला. and around I think I don't remember exactly how much area given to Tata company during that time. मोर मन पड़न एक्जाक्टली केते, कारण लॉन्ग बैक हम पढ़ी थिली. आपण सरप्राइज हेबे चिंगुड़ी चाष करिया पाई टाटा कंपनी को लीज रे दिया गला फॉर 99 इयर्स. ठीक अछि. इवन टाटा कंपनी had started its work, but what happened, the local people, हमर सब प्रॉब्लम का कोन हुए, लोकल पीपल लोग जे साधारण लोग जो अशिक्षित लोक अछन ताको जे आपण कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देखेले किंबा कोनस पर लोभ देखे देले से माने सेतिरे कोन एग्री करि जांती. नॉर्मल सब जगह से हुए. Same thing happened in the case of 1980s. But interestingly, many NGOs they highlighted चिलिका issue. As a result, कारण से माने क्लेम कले जदि टाटा कंपनी सेठी आपनकर फार्मिंग करूची, प्रॉन फार्मिंग करूची, प्रॉब्लम टा कोन हबो, the equilibrium or ecological imbalance will happen in the case of चिलिका. Because they utilize different kind of chemicals and fertilizers for the sake of high breeding. चिंगुड़ी जल्दी करिया चाष करिया पाई, जल्दी हो पाई कि बड़ होबा पाई से माने कोन करिवे, से माने विभिन्न प्रकार केमिकल्स यूज करिवे कि फर्टिलाइजर्स यूज करिवे, एनी काइंड मेडिसिन्स यूज करि पारंती. and it will have very negative implication on environment, on चिलिका and its periphery. लोक माने सेते बहुत पॉलिटिक्स हेतिला, बहुत पॉलिटिक्स हेतिला. अभी आपण सेटा उत्कल यूनिवर्सिटी तार लीड नेतिला. उत्कल यूनिवर्सिटी के टीचर और स्टूडेंट माने
ସେମାନେ ଆସିକି they became so active in the region of Chilica and its periphery. So my and finally the government forced to reject that plan. ତା ଫଳରେ କ'ଣ କରାଗଲା, ଯୋଉ ଟେଣ୍ଡରଟା ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ନେଇଥିଲା ତାକୁ କ୍ୟାନସେଲ କରାଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମ ନିଜ କଥା ଆମେ କହୁଛେ। ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ହାପନିଂ ଇନ୍ ଦ କେସ୍ ଅଫ ବେଦାନ୍ତ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଡିସ୍କସନ କରୁନି। So the point is that the role of NGOs cannot be denied in the case of in the case of preservation or conservation of biodiversity. ठीक अछि ना, आपण माने एति बुझी पारले आजिर जहाँ डिस्कशन कले? Yes, sir. ओके, कार किछ आपण मान डाउट रहिला कि जो जिनिस आपण लागु जे हम हाइलाइट करिने किबा करिवार आवश्यकता रहिछु? ओके, ठीक अछि, हमें पुनी काली क्लास नबा। हमें विल बी टॉकिंग अबाउट different sources. It may be water resources. देखिए हम कौन last class we will be talking about different international convention related to global warming, climate change, जोड़ा अपना कोर्स रे अछि। ठीक अछि, तेणु हमें तो डिस्कशन करिवा। तो आज ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ପୁଣି see you tomorrow। ठीक अछि ନା? ओके, बाय बाय। Okay, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Good night।